Hello everyone, welcome to PTE Reorder Paragraph Real Exam Question Series. This is 53rd video in this series. It means that we have already covered 52 real exam questions जो students को real exam में आए हैं. Along with that, we have discussed the tips, strategies and hacks how to solve reorder paragraphs. So first things first, now PTE is accepted in UK. So if you want to study, work or settle in UK, you can do it through PTE. And 90% of Canadian universities now accept PTE academic. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now question students ask, sir, can we also achieve our target score? The answer is big yes, and you can do it in next attempt. If you follow our strategies, tips and hacks for all the modules, you will be able to score. And we post such informative videos on a regular basis. So that's why do not forget to subscribe to our channel. And PT reading is of 32 to 41 minutes and it is not scored out of 90. Now most of you guys know, if you are a repeat viewer, you know that it is scored out of 47. It has 5 question types and the third question type in this series is reorder paragraphs. And this is the real scoring. You can see कि 47 marks कैसे total में आते हैं. Reading के module के reorder paragraphs are of 6 marks. So if you are getting 3 reorder paragraphs, they will be of 2 marks. Okay. And one thing which you need to pay attention is this, that you can spend a maximum of 2 minutes on one reorder paragraph. इससे ज़्यादा time आप नहीं spend कर सकते हो. अब 2 minutes में क्या आप words के meaning समझ सकते हो? The answer is big no. But what you need to do is you need to apply our techniques. You have to skim it. First, you have to skim for the independent line. Then you have to follow our strategies. And then you have to make the pairs. Your focus should be on pairs. And then you have to confirm it. Okay. And this is how the reorder paragraphs will be solved in 2 minutes. This is today's reorder paragraph. As usual, I'm going to give you 30 seconds and then after that we are going to discuss it. Okay, so we are back. Now you know that first thing we skim it for finding independent line, and अगर possible हो सकता है so we are going to find conclusion line also. So let's get started. So the first line, the free online heart age test. The free online heart age test, the use हो रहा है means वो कुछ already define होगा, right? So that's why we have to cross it, right? And we cannot choose this as an independent line, and finding independent line has our own rules. Okay, like उसमें pronoun नहीं हो सकता, वो already defined नहीं हो सकता, वो किसी और पे dependent नहीं होगे. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ क्रिएटेड एन ऑनलाइन टेस्ट. देखिए यहाँ पे वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, जो द फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है एन के साथ. इन एफर्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीज और स्ट्रोक. यस, एक ये इंडिपेंडेंट लाइन आपको लग रही है, राइट? सो लेट्स कीप इट. In the urban areas, 75% of individuals who have taken the test आ गया यहाँ पे, जो टेस्ट की बात हो रही है, means ये independent line नहीं हो सकती. What we are going is we are doing process of elimination. We are eliminating the wrong options or those lines which we think cannot be independent, and we will keep that line which we think is independent. A campaign has been launched to help people find out their heart age. Yes. This seems like independent line also. So we have two independent lines over here. Those who have a heart age higher than their real age are at an increased risk of heart attack or stroke. Those means कुछ बात हो चुकी होगी लोगों की, right?
और यहाँ पे हार्ट एज की बात आपको पता है जब आपने स्किम किया है, सो दिस कैन नॉट बी योर इंडिपेंडेंट लाइन ऑल्सो, सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस ऑल्सो एज आर independent line. So now we have two independent lines. Remember, you have to follow the BS strategy, brought to specific strategies, when you have more than two independent lines. And secondly, the second thing, important thing which you need to remember is this. अब आप देखिए यहाँ पे Ministry of Health has created an online test in an effort to reduce the number of deaths from the heart disease or stroke. ठीक है, एक टेस्ट क्रिएट किया है और एक कैंपेन लॉन्च हुआ है लोगों की हार्ट एज के बारे में फाइंड आउट करने के बारे में. अब इन दोनों में से कौन सा जनरल यादा है? दिस लाइन इज मोर जेनरिक, क्योंकि पहले कैंपेन लॉन्च होगा, राइट, जैसे हम कहते हैं कैंपेन लॉन्च हुआ, फिर आप उसकी डिटेल्स बताते हैं कि उस चीज में उन्होंने मिनिस्ट्री ने एक टेस्ट क्रिएट किया है जिसमें आप हार्ट एज को फाइंड आउट कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस नाउ कि आपके इन दोनों में से कौन सी इंडिपेंडेंट लाइन होगी. दिस इज गोइंग टू बी मोर इंडिपेंडेंट, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट. अब वो जो सेकंड लाइन है जो हार्ट एज की बात हो रही है, राइट, हार्ट एज क्या हुआ है, हार्ट एज फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट बनाया है. ठीक है, ये आपका वो टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, राइट, कि पहले आपने कैंपेन के बारे में बताया, लॉजिकली ऐसे ही चलती है चीज, उसके बाद आपने टेस्ट बताया, बट आवर फोकस इज ऑन पेयर्स. आपको पेयर्स बनाने पे फोकस रखना है, रिमेंबर. तो हाउ वी कैन नाउ डू दिस. अब आप देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है तो आपको पता है कि ये ऊपर आएगा, और उसके बाद जहाँ पे द फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट है, उसके बाद द टेस्ट है, और यहाँ पे टेकन वाली बात हो रही है. सो ये अब आपको व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये डिसाइड करना है इस लाइन के बाद ये वाली लाइन आएगी या ये वाली लाइन आएगी. देखिए जो लॉजिकल फ्लो ऑर्डर है वो किस हिसाब से चलेगा. पहले आपने कैंपेन के बारे में बताया, फिर आपने टेस्ट के बारे में बताया, उसके बाद आप टेस्ट की बात करोगे, लास्ट में ही तो टेस्ट लेंगे ना. अंडरटेक जिसने टेस्ट लिया उसके रिजल्ट्स होंगे ना, राइट. अंडरटेक के लिए यहाँ ये क्या है, दीज आर, दिस लाइन टेल्स यू इट्स रिजल्ट्स, कि जिन्होंने वो टेस्ट लिया है, जिनकी हार्ट एज ज़्यादा है उनके रियल एज से, उनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है. So this is how it's going to work, right? I hope this is clear. So now see, अब depending upon our AB strategy और BS strategy, what was that strategy? पहले आप बड़ी बात करते हो. अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया. उसके बाद द फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट आस्क पीपल, मीन्स यहाँ पे आपने वो पूरा नाम डिफाइन किया हुआ और यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है. सो यू नो दैट स्ट्रैटेजी. जैसे अब भरत ब्रिज लिखा होता है, भरत ब्रिज के बाद ब्रिज आएगा, सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी. तो सेम वे यहाँ पे आपका द फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट पहले आएगा और उसके बाद द टेस्ट आएगा. सो लेट्स सी दैट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब ये लास्ट में है हमारा रिजल्ट है. सो नाउ वी हैव मोर और लेस सॉल्व द कंप्लीट रीऑर्डर पैराग्राफ. तो यहाँ पे सेकेंड लाइन आपकी ये वाली बनेगी जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस टेस्ट को, राइट, क्रिएटेड एन ऑनलाइन टेस्ट. देन जो थर्ड लाइन है कि अब द फ्री ऑनलाइन हार्ट एज टेस्ट आस्क पीपल सम बेसिक क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, सो अब आपने यहाँ पे टेस्ट इंट्रोड्यूस किया डिपेंडिंग अपॉन आर एसओ स्ट्रैटेजी. अब आप बता रहे हो लॉजिकल ऑर्डर के में कि पहले आपने टेस्ट का नाम बताया, फिर आप बताओगे कि टेस्ट में होता क्या क्या है. तो वो आप ये बता रहे हो कि टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, राइट. उसके बाद लोगों ने टेस्ट लिया, किस लाइक अर्बन एरियाज में 75 इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने टेस्ट लिया, वो बता रहे हैं कि उनकी जो रियल एज और हार्ट एज में डिफरेंस है. तो लॉजिकल फ्लो देखिए, पहले आपने टेस्ट को डिफाइन किया, इंट्रोड्यूस किया, आई विल से इट लाइक दिस, इंट्रोड्यूस किया टेस्ट को. उसके बाद आपने उस टेस्ट को डिफाइन किया कि क्या क्या होता है. उसके बाद आपने कहा कि लोगों ने टेस्ट लिया है, टुक टेस्ट, राइट, और वैसे भी ये लास्ट लाइन है और रिजल्ट उसके बाद में आएंगे. सो दिस इज योर लॉजिकल फ्लो ऑल्सो ऑफ समथिंग, कि पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, फिर डिफाइन करते हो उस चीज को, उसके बाद टेस्ट टेकन की बात होती है कि टेस्ट लिया, और उसके बाद लास्ट में आप रिजल्ट बताते हो. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. Let's see if all the answers are correct, all the pairs are correct or not. Yes, all the answers and pairs are correct. So you see, if you follow our strategy, things are going to be very simple. You can easily solve within 2 minutes. What are our strategies now? Our first strategy is finding independent line, the way you have seen it. Then BS strategy, you have seen its usage today to find independent line. जब हमारे पास दो independent lines थी.
brought to specific thing. Then CO strategy, chronological order strategy, जो आपके time की बात होती है, we applied this strategy. LO strategy, you have seen its usage today. Logical order strategy, connectors, जैसे आप connectors यूज कैसे कर सकते हैं strategy के लिए. TO strategy, topic order strategy. AB strategy, abbreviation strategy, you had seen today its use also, कि जहाँ पे आपने full name देखा, उसके बाद उसका short form देखा, Bharat Bridge to Bridge. Then SO strategy, you have seen its usage also. Subject object strategy, जहाँ पे आपने टेस्ट की पेयर्स उस हिसाब से बनाए. And then last sentences rule. Then we have certain rules for finding out last sentences. So if you can implement, if you can practice these strategies, reorder paragraph solve करना आपके लिए बहुत easy हो जाएगा. But remember, you just have 2 minutes. So in first 30 to 60 seconds, you have to skim the content, you have to find independent line and try to find conclusion line. In next 30 to 60 seconds, you have to apply the strategies to make pairs. Okay? And all the strategies which we teach are validated and proven strategies. The scorecard or the ticker which you can see below is the proof that so many students of ours have achieved their target score. And these are some of our success stories where students have scored 90, 87, 86, 82, 81. So if these guys can score, you can also score. This is our WhatsApp number 8699121121. If you have any question or doubt, if you want to take online coaching or in-institute coaching, you are welcome to WhatsApp us. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.